engineers and just doctors and engineers of the near future. This is Vijay Kumar Soni from the Chemistry Wala channel as a YouTube channel. Today we'll go with the further next video. अभी तक लगभग 7 videos upload कर चुका हूँ regarding to just complex compound and coordination compound and a lot of things. Today we'll go with the next video with the just nomenclature of complex compound. इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर एंड द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विद द ब्रिज बॉन्डेड which is very important for the NEET and IIT and graduation also and 12th standard if you want to go with the deeply. So be with me with the continue. So this is the nomenclature of complex compounds. Students and chemistry lovers, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहीं आकर के अपना मात खा जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन में छोटी छोटी मिस्टेक्स कर जाते हैं. वो मिस्टेक्स नहीं करनी है आपको. एग्जैक्ट एक्यूरेट फार्मूला आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, उसका यूज करेंगे तो हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी होगा. फॉर दिस यू विल यूज फॉलोइंग फार्मूला. इस टाइप से आपको फार्मूला यूज करना है कि आप अभी तक पढ़ चुके हैं. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक स्क्वायर ब्रैकेट होगा. आइदर या तो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ होगा देन इट विल बी एज अ कैटायन, या राइट हैंड साइड में कुछ होगा देन इट विल बी एज अ एनायन. दिस विल बी योर कैटायन ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन राइट साइड इट विल बी एनायन. इफ बोथ आर नॉट प्रेजेंट देन होल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विल बी न्यूट्रल. हम पढ़ चुके हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गो विद द मेटल एटम. This is the पहले मुलाकात आपकी मेटल एटम से होगी. आफ्टर देन इट विल बी लिगेंड्स. लिगेंड्स एक ही टाइप के भी हो सकते हैं एज अ होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं एज अ हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स. सो आपको क्या फार्मूला यूज करना है इसके रिगार्डिंग. दिस इज द कैटायन. कैटायन का कोई नंबर एक्सप्लेन नहीं करना है. कैसे नहीं करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा. This is the cation. No number will explain. कोई नंबर एक्सप्लेन नहीं करनी है. Further, if you will go with the square bracket, then it will be ligands. First of all, you have to write ligands, and in alphabetic manner. If there is more than one kind of the ligand, alphabetic manner या alphabetic sequence. Further it will use of metal atom after ligands. It will be use of metal atom. If there is negative charge over the square bracket over here, then here will use of suffix 8. 8 will be only for those when complex ion exists negative charge. Now further it will be oxidation number. Oxidation number will be used by the small bracket, and in RF, here is RF means Roman figure. Further you will use anion. If there is anion, then again no number will explain. यहां भी नंबर को एक्सप्लेन नहीं करना है. हाउ विल लेट्स सी विद द प्रैक्टिस. इफ विल गो विद द फॉर्मूला देन दिस इज द प्रैक्टिस. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो विद द कंपाउंड K4FeCN whole 6. K4FeCN whole 6. First of all you have to go with the dissociation of complex compound. बिल्कुल पोलाइट वे में एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, अच्छे से सुनिएगा. सो हियर इज द कैटायन इन दिस कॉम्प्लेक्स. नो एनायन, तो इन दैट केस कॉम्प्लेक्स आयन विल एक्ट एज अ एनायन. ओके, कॉम्प्लेक्स आयन विल एक्ट एज एन आयन, देन इट विल यूज ऑफ suffix 8 with the central metal atom. For example, if metal is cobalt, then it will be cobaltate.
If metal atom is copper, then it will be cuprate. If metal atom is argentum, then it will be argentate. If metal atom is platinum, then it will be platinate. Copper के लिए cooperate ना करें, cuprate करें. So first of all, this is the dissociation. From this there will a lot of things, बहुत सारी चीजें आपको पता लगेंगी और मैं वही सब कुछ एक एक सीक्वेंशियल वन वन क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताते चल रहा हूँ. So this will dissociate in K4 of K plus. This is the complex ion Fe. This is your Cn. This is whole 6 and here will be 4 minus charge. First of all, I would like to go with the coordination number. Cn is a monodentate ligand. Total number is 6. So coordination number is 6. Second is your number of ions. So as I told you in the previous video, for the conductance, ये जरूरी है जानना. Number of ions, 4 counter ion and 1 complex ion. So it will be 4 plus 1, total ion will be 5. Now we have to go with the oxidation number. Oxidation number हम central metal atom का find out करते हैं. Central metal atom is Fe. So पोटेशियम के लिए बात करें तो +1 बिकॉज इट्स अल्कली मेटल. अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा. टोटल नंबर इज 4. Fe इज योर X. दिस इज योर Cn -1 होल 6. पूरे कॉम्प्लेक्स पे इस पे नहीं जाना, इस पे जाना कंपाउंड पे. पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं, सो इट विल बी 0. फर्स्ट ऑफ ऑल +4. दिस इज द X ±-6 0. X -2 0. Oxidation state will be +2. X is equals to +2. So it will be in the Roman figure second. This is the best way. Now the type of the complex. Complex में केवल एक ही टाइप का 6 ligand है. So could I say it's a homoleptic complex? Homoleptic complex. This was the about 4 important things. Coordination number, number of ions, oxidation number and type of complex compound. Now I would like to go with the nomenclature. आपको फर्स्ट वर्ड ऑलवेज कैपिटल लेना है. कहां से स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कैटायन. हियर इज 4 पोटेशियम, तो टेट्रा पोटेशियम नहीं लेना है, केवल क्या लेना है? पोटेशियम. बिकॉज हमने लिखा है यहाँ पे 9 नंबर विल एक्सप्लेन. कोई नंबर शो नहीं करनी है. K3 आ जाता तो ट्राई पोटेशियम नहीं कहते, केवल पोटेशियम कहते हैं. अगर आपके पास में K2 रहता तो डाई पोटेशियम नहीं कहते, केवल पोटेशियम कहते हैं. सो नो नंबर विल एक्सप्लेन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो विद द कैपिटल वर्ड P. दिस इज द पोटेशियम. नाउ पर्टिकुलर आपके पास में कैटायन गिवन हो, कॉम्प्लेक्स आयन हो, तो कैटायन और कॉम्प्लेक्स आयन के बीच में आपको गैप यूज करना है. वी डोंट हैव प्रॉपर सफिक्स ओवर हियर, प्रॉपर स्पेस ओवर हियर, सो आई विल टेक जस्ट बिलो. सो स्टार्ट करेंगे कहां से? लिगेंड से. एक ही टाइप के लिगेंड है, 6 लिगेंड है. सो इट विल बी हेक्सा साइनिडो. Cn को साइनिडो या साइनो भी कहते हैं. सो दिस इज द हेक्सा साइनिडो. आफ्टर देन मेटल एटम. मेटल एटम इज फेरस. दिस इज द फेरस. कॉम्प्लेक्स में चार्ज आ रहा है आपके पास में नेगेटिव चार्ज आ रहा है, देन इट विल बी यूज ऑफ सफिक्स 8. So this will be the ferrate. Ferrous plus 8, ferrate, not ferricate. It will be ferrate. And oxidation state आपके पास में आ रही है सेकंड, उसको स्मॉल ब्रैकेट में एज इट इज लिखना है बेटा. This is the name. First letter should be capital. And if there is cation, then between cation and complex ion it should be the gap. गैप जरूर रखेंगे. अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है तो पर्टिकुलर हम इसको वन टाइम और रिपीट करके लिख देते हैं कि आपको कंटिन्यूअसली कैसे लिखना है. कुछ इस टाइप से. दिस इज द पोपी पर्टिकुलर कैपिटल. दिस इज द पोटेशियम. फर्दर गैप हेक्सा साइनिडो फेरेट एंड दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड. कुछ इस टाइप से. कॉम्प्लेक्स आयन का नेम कंटिन्यू लिखना है विदाउट एनी स्पेस. If you are writing without any space, then it will be perfectly right. So this was the first question. First of all, coordination number. Second of all, just ions. Number 3 is your oxidation number. Number 4 is your type of complex. Number 5 is your nomenclature.
इतना सब कुछ अगर आप याद करेंगे तो पर्टिकुलर आपकी प्रैक्टिस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ग्रिप पे आ जाएगी. सो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल. Now I would like to go with the second example. हमने आपसे कहा ना आपको हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर तरीका बताएंगे एज आई कमिट विद यू इन द फर्स्ट वीडियो. और ये चैनल बिल्कुल ईमानदारी के साथ में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ. हर एक चीज ईमानदारी के साथ में, कोई फेकनेस नहीं है. आप लोगों के पर्टिकुलर कोई भी सुझाव हो देन मोस्ट वेलकम. आप लोगों का स्वागत है. आप थ्रू द जस्ट व्हाट्सएप नंबर, थ्रू द जस्ट यूट्यूब चैनल अपने मैसेज को आप सेंड कर सकते हैं, अपने डाउट्स को हमसे शेयर कर सकते हैं. मैं विजय सोनी आपके लिए हर बार तैयार रहूंगा. सो सेकेंड क्वेश्चन इज योर. नाउ दिस इज द क्वेश्चन CO. दिस इज योर NH3 होल 6 Cl3. इस बार आपके पास में अगर आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पहचानेंगे, मेटल एटम, लिगेंड एंड एनायन प्रेजेंट है. एनायन प्रेजेंट है, वही इसका डिसोसिएशन करके देखेंगे आप. इसका डिसोसिएशन किया देन इट विल बी CO NH3 होल 6. दिस इज द +3 एंड दिस इज द 3Cl माइनस. नो डाउट कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो मेटल के साथ में 8 नहीं लगेगा. सो व्हाट विल बी, if we'll go with the first of all, then this is the coordination number. Monodentate ligand total number is 6, so coordination number 6. Further is your, just you can say oxidation number. This is your oxidation number. Cobalt X assume किया, NH3 molecule 0 कर दिया, Cl के लिए चार्ज -1, total number is your 3 and पूरे पे कोई चार्ज नहीं, so equals to 0. So what will be X? This is the 0. This is the -3, 0, X is equals to +3. So oxidation state will be third. Now the time to discuss about further this type of complex compound and number of ions. If we'll go with the number of ions, then here is 1 of the complex ion and 3 of counter ion. So 1 plus 3 is equals to 4 ions. It exists only one kind of the ligand, 6. So you will say it is homoleptic complex. This is the homoleptic complex. Now we'll go with the nomenclature. No cation. So we'll start from the ligands. If there are more than one kind of the ligands, then alphabetically. But here is only one kind of the ligand. So we'll go with the just numerically. There is 6 ligands. So it will be hexaamine. So the name will be. This is the hexaamine. AMMINE. Hexaamine. Further is your metal atom, that is your cobalt. So this is the cobalt without any space, cobalt. Further is your oxidation number in Roman figure. So this is your cobalt third. Further here is not space. Next is your anion. Here is not space. I am writing here anion. इनके लिए भी कोई नंबर एक्सप्लेन नहीं करनी है. इनको आप ट्राइक्लोराइड नहीं लिखेंगे. This will be as a chloride. So the name will be as a chloride. अगर इसको कंटिन्यू फ्लो में लिख के दिखाऊं देन इट विल बी एज अ हेक्सा. दिस इज द एमीन. दिस इज योर कोबाल्ट. दिस इज योर थर्ड एंड दिस इज द क्लोराइड. दिस विल बी द राइट description of the name of compound. So this was about the second practice. Share it. Okay, now I would like to go with the third type of the complex compound. What is that? We'll see. We'll see about them. Now I would like to go with the complex ion. How? This is the third question. Suppose you have CuNH3. This is whole for 2 plus. First of all, coordination number. NH3 is the monodentate ligand.
टोटल नंबर इज 4, नो रिक्वायर्ड टू डिसोसिएशन क्योंकि कुछ लेफ्ट और राइट में है ही नहीं, अपने आप में खुद एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेशन नंबर इज योर 4. फर्दर ऑक्सीडेशन नंबर Cu एज्यूम करना है x, NH3 will be as a 0 and this is your +2. So x is equals to +2. Oxidation state will be second. Number of ions की बात करें then it is single ion, complex ion. So number of ion will be 1. This is the ions. If we'll go with the just complex ion then it acts only one kind of the ligand. So we can write here this is the homoleptic complex ion. Homoleptic complex ion. Now we'll go with the just nomenclature. What is that? We'll start from the cation. Here is none of cation, so we'll go with the no cation ligands. So here is 4 ligand. So you will write capital letter. This is the tetraamine. Now metal atom. Here is positive ion. So what we'll see? Let's see. Here will not use of 8. Here will use of metal atom after the oxidation state. Metal atom is your copper. Metal atom is your copper. And after then oxidation state is your second. After then it will be use of ion for cation. Only for cation. Because of anion के लिए तो 8 आना है. So continuously if you want to write then you can write it as follows. This is the tetraamine. This is your copper. This is your second and this is your iron. This is the right way to write the complex, the name of complex compound. Is that clear? Now we'll go with the fourth question. As a anion, what may listen me carefully. Listen me carefully and properly because of its essential. क्योंकि यहाँ हम तो एक ही बात जानते हैं, हटेंगे नकाब चेहरे से, अभी आंधी बाकी है, तो उसी चीज का वेट कर रहे हैं. आगे चलते हैं. जस्ट दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन. एज अ यू कैन से anion and we can take this is the FeCN or you can take just Fe F6 4 minus. Now this is the complex ion as a negative ion. So number of ion, this is the single ion, so it will be 1. Now the coordination number, monodentate total number 6, so coordination number will be 6. Now after total ion coordination number it will be oxidation number, so oxidation number will be x plus, this is the -1 whole 6, this is the -4, so it will be x minus 6 plus 4 0, x minus 2 0, x is equals to +2. So oxidation state will be second. Now the type of complex, it exists only one kind of the ligand, so it will be homoleptic complex. Homoleptic complex के रूप में काम करेगा. Further nomenclature. Nomenclature will start from the ligand according to formula. इस फार्मूले को नहीं भूलना है, इस फार्मूले को फ्लो में यूज करना है, प्रैक्टिस करनी है. So and I'll share with you all just one sheet of the practice also in the next video. So further name, this is the 6th ligand as a fluorido, so it will be as a hexafluorido. Further this is the ferrous, oxidation state second, that's why ferrous, so this will be ferrous plus negative charge है, so it will use of suffix 8, so this will be ferrate, hexafluorido, ferrate and oxidation state is your second. देख सकते हैं for the negatively charged it will be use of suffix 8. So this was about the just fourth question. In the next video we'll take just 6 to 10 example also. Till then शुक्रिया, धन्यवाद. इसी तरीके से मुझ में विश्वास जताए रखें. नो डाउट एक दिन जीत का पतंगा, जीत का ध्वजा, जीत का झंडा जरूर लहराएंगे. थैंक यू, शुक्रिया.